Hello friends, here we are discussing different concepts related to education, which helps people teacher in their preparation for many academic and entrance examination. Welcome to Vibrant Classroom. Hi friends, welcome to another class of Philosophical Foundation of Education, and the discussion topic which is come from Western Schools of Philosophy, and that is the second class of Western Schools of Philosophy. In our previous class we already discussed the concept of idealism, and today we will discuss about the concept of naturalism and education. तो एठी गोटे क्वेश्चन आसे जे आइडियलिज्म कॉन्सेप्ट आगे तो थिला एंशिएंट पीरियड रे तो नेचुरलिज्म कॉन्सेप्ट कोन पई आसिला तो एठी हमु खाली टिके बुझिया पई पडिबो जे आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट रे जो कॉन्सेप्ट थिला धीरे धीरे कोन हला ना से कॉन्सेप्ट ऑर्थोडॉक्स इन नेचर जो आमे कहि परिबा जो तारो जो प्रोसेस द सिस्टम आउ जो मानकर एजुकेशन सिस्टम रे जो मानकर होल्ड अप रहिला सेमानकर मोनोपोली स्टार्ट हो गला ताकू अपोज करिकी किछि फिलोसोफर न्यू कॉन्सेप्ट रो गोटे एजुकेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फिलोसफी को नेकी आसिले जो फिलोसफी रो ना होची नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास ऑफ नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन. So first we try to understand the concept of naturalism. What is naturalism? जमिति कि आमे आइडियलिज्म रे डिस्कशन करथुलु द वर्ड आइडियलिज्म डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड आइडियल्स और आइडिया एमिति वर्ड रो आमे नै कि आस्तुलु. In same process, when we elaborate the concept of naturalism, then we found there was two important word, not only two, that is the single word, but the meaning is different. Nature. तो जेतेबेला आमे नेचर कथा कहिबा इन जनरली आमे आम सराउंडिंग रे जो जिनस सब अछि ताको आमे आम नेचर बोली कहू. एंड आल्सो वी ऑल इंडिविजुअल्स हैव आवर ओन नेचर. आम निजर गोटे नेचर अछि, आम सराउंडिंग रे गोटे नेचुरल बा एनवायरनमेंट रे जो कांसेप्ट रहउछि ताको आमे नेचर बोली कहू. एई दुईटा कांसेप्ट को फोकस कला एई पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिलोसफी. नेचुरलिज्म बा नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर दे बिलीव दैट nature, that is our inner nature or our outer nature, both are important and both provide us the actual education. जोटा कि हमरो जेमिति कि हमें देखुतलु आइडियलिज्म रे कांसेप्ट के डिफरेंट थिला ताकू कंट्रारी करी कि जो नेचुरलिज्म रो कांसेप्ट आसिला जे कि नेचर रो कांसेप्ट को बेसी इंपोर्टेंस देला जे इंडिविजुअल रो गुटे ओन नेचर अछि आउ तार आउटसाइड जो नेचर अछि बोथ नेचर आर इंपोर्टेंट आउ से इंपोर्टेंस केमिति रहउछि आमे बे डिस्कशन करिबा. Naturalism is also termed as a materialism. According to the philosophy, the basic of the world is matter. But in idealistic concept रे आमे टिके जेतबे कंपेयर करिक टिके देखिबा हमको आउ टिके इजी हो बुझिया पई. आइडियलिस्टिक concept रे हमको कोन कहउतला ना आवर माइंड बा आइडियल्स जो कथाटा रहउछि बा द फंक्शन ऑफ आवर माइंड दैट इज द प्राइमरी एट्रिब्यूट. But here naturalist by naturalism philosophy consider the material world which are present in our surrounding, that is the primary thing for the individuals. Mind is the form of matter or an element of matter. जो mind कथा कहउचंदी that is a form of matter or an element of matter बोली हमें consider करचंदी, or a systematic or both. Naturalism philosophy defines life in term of material and chemical laws and emphasize the relationship between power, speed and the matter as of the nature of causal relationship. तो जो नेचर रे जो सब कथा रहउची नेचुरल फेनोमेनन ताकर रिलेशनशिप सेही सब कथारु आमे नॉलेज गेन करंती बा हमकु से लर्न सिखाए एई भलिया कांसेप्ट बा हम जो नेचर रे हम मटेरियल वर्ल्ड आमे जो देखुचंती दैट इज द इंपोर्टेंट थिंग फॉर द एवरी इंडिविजुअल. एई कांसेप्ट को नेकी नेचुरलिज्म आसिला. Then now we discuss the basic principles of naturalism. तो कौन देखिबा. The first one is the universe is a huge machine. Man is also a part of this machine and complete machine in itself also. तो universe जो कथाटा हम कहउचंती ये गोटे huge machine बड़ machine टे. We individuals are the part of that machine and also we are
our itself आमे निजु को निजे भी गुटे machine हिसाब रे consider करि परिबा and life come out of dead matters and is a sum total of physical and chemical reactions जो माने हमर दर साइंस पिला माने थिबे जो डिग्रेडेशन प्रोसेस रे जो सब कथा होउची केमिति गुटे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस चालुची तो सेही कांसेप्ट ता कोठु आछी ना नेचर रु आछी तो से कहूची जे लाइफ कम्स आउट ऑफ डेड मैटर रो लाइफ पुनी थरे नुआ करी तयारी होउची आउ दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस all the capacities of an individual human beings are delimited by his nature that means आमे माने नेचर आगे जते बेले नेचर हमकू शासन करिवो बा नेचर जते बेले हम ऊपर हावी होबो सेते बेले आमे किछि करि परिबेनी तो सेही कांसेप्ट ता कहूची जे जते बेले नेचर फोकस्ड होबो सेते बेले डिलिमिटेड हे जिवो कोन ना आम निजर जो कांसेप्ट ता अछि आम माइंड रो जो कांसेप्ट ता अछि से सब जिंस डोमिनेट हे जिवो and these are his innate and inherent tendencies and basic instinct then fourth point रे कहिला जे man is a supreme creation of the nature जो human being कथा कहउचंती the important creation of our nature ए concept को किए बिलीव करथुला naturalism and the present life is the real life आमे जो natural phenomenon रे रहउचंती जोटा हमर stability अछि जोठी हमर existence अछि जो मटेरियल थिंग को नहीं कि आमे निजो को निजे तयारी करछंती बा हम सराउंडिंग तयारी हिची दीज आर द रियल थिंग्स तो सेटा को से रियल लाइफ बोली कंसीडर करूची देन अनचेंजिंग लॉ ऑफ नेचर एक्सप्लेन्स ऑल द इवेंट्स एंड ऑकरेंस ऑफ द वर्ल्ड तो ए जो नेचर रो जो कथाटा रहउची अनचेंजिंग लॉ ऑफ नेचर एक्सप्लेन्स ऑल द इवेंट्स एंड ऑकरेंस ऑफ द वर्ल्ड जो वर्ल्ड रो जो फेनोमेनन रहउची जो कांसेप्ट जोठी अछंती जेमिति अछंती these are the real concept and unchanging truth boli naturalism believe kale and the true explanation of reality can also only be done in term of physical science तो ये जेहेतु गुटे नेचुरलिस्टिक कांसेप्ट को नहीं के आछी मटेरियलिस्टिक कांसेप्ट को नहीं के आछी तो जेहेतु साइंस रो डिफरेंट सब्जेक्ट्स दे डील्स विथ द मैटर and matters phenomenon due to that naturalism consider the explanation of reality can be done in term of physical science केवल physical science term रे ही हम ताको डिफाइन करि परिबा then thoughts depend on physical circumstances they are activated only when some external stimuli affect the body organ of an individual okay तो केते बेले आमे कोन करूचंती ना आमे जते बेले किछि गुटे जानिया पई चाहुचंती बा जानुचंती only through the stimuli okay आ stimuli टा कहा थ्रो रे हम भितर को आछी ना through the body organs of the individuals that means by the use of your sense organs so these are the basic principles of naturalism okay आउ जहार जोंटी डाउट रहिबो इन केस डाउट रहिला तो माने कमेंट सेक्शन रे निश्चित जाई कि सेठी डाउट पचारि परिबो मु चेष्टा करबी आइदर कमेंट रे हो बा वीडियो करी कि हो जो डाउट गुडा रहिबो ताको क्लियर करिया पई देन हम एजुकेशनल इंप्लिकेशन को आसीबा दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड द प्रिंसिपल पार्ट जते बेले लॉन्ग क्वेश्चन ले क्वेश्चन आसीबो सेते बेले हम सेही दिटा पार्ट को इंट्रोडक्शन रे आउ हमर जो प्रिंसिपल जो बेसिक कांसेप्ट नेचुरलिज्म रो रहिला सेठी हम लिखि परिबा तो वर्तमान हम एजुकेशनल इंप्लिकेशन को आसीबा जोटा कि फर्स्ट स्टार्टिंग विथ एम्स ऑफ एजुकेशन सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इन नेचुरलिज्म दैट इज टू परफेक्ट द ह्यूमन मशीन तो हमें आगु जस्ट डिस्कशन करके आसिले in the naturalistic concept human beings are considered as a machine okay so human beings are the perfect machine ଆଉ से परफेक्ट मशीन भितर जो परफेक्शन अना हबो थ्रू एजुकेशन से कांसेप्ट को फर्स्ट से ता एम रे फिक्स कला सो द परफेक्ट टू परफेक्ट द ह्यूमन मशीन जो आमे मशीनरी एक्टिविटी आम लाइफ रे होउची बा आमे निजो को निजे जो मशीन गुटे हिसाब रे कंसीडर करूची बा नेचुरलिस्ट आम ह्यूमन बीइंग गुटे जो मशीन हिसाब रे कंसीडर करूची तो सेही मशीन रो परफेक्शन आनिबाटा फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन बोली नेचुरलिज्म बिलीव कला एंड द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक इंडिविजुअल वर्क वेरी efficiently as a part of huge machine universe and also work as a very efficient machine himself तो अलगा यूनिवर्स पई बा हम सराउंडिंग पई गुटे परफेक्ट मशीन हिसाब रे हमें निजु को एस्टैब्लिश करबा एंड सिमिलरली हमें निजे जो मशीन हिसाब रे निजु को निजे प्रॉपर्ली ताको फंक्शनेट करिया पई चिंता करिबा दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म देन द सेकंड वन इज
attainment of present and future happiness. तो जो कॉन्सेप्टटा नेचुरल आइडियलिज्म रे थिला ते जो हैप्पीनेस रो कथा रहउतला दैट इज इनर हैप्पीनेस रो कॉन्सेप्ट रहउतला तो ए जगह टिके सेटी डेविएशंस आसीबो द मटेरियल थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग दीज आर द एक्चुअल प्रोवाइडर ऑफ हैप्पीनेस ए कॉन्सेप्ट को हमकु एजुकेशन थ्रू रे बुझिया पई पडिबो बोली नेचुरलिज्म कहूची सो द सेकंड एम से डिफाइन कला अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस Biological naturalism advocates the attainment of happiness in the present life as well as in the life to come. तो present life रे जो हम सिचुएशन ला में जो उठ रहउचंती ता पई हम हैप्पीनेस गैदर करचंती फ्रॉम आवर नेचर. सिमिलरली आमे जो फ्यूचर कथा जो चिंता करिबा फ्यूचर रे आमे केमिति हैप्पीनेस आम भीतर रहिबो आमे केमिति खुशी रहिबा से कथा भी डिफाइन करिवो किए ना हमरो एजुकेशन थ्रू एजुकेशन आमे से कांसेप्ट को डिफाइन करि परिबा दैट इज अनदर एम ऑफ एजुकेशन. Then the third aim is preparation for struggle of existence. जोटा कि आमे बहु बार बहु जगह रे भी देखि चंती जे ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज ट्राई टू maintain the existence okay in this universe. Due to that human beings can also maintain different type of struggle in their life. So another aim is हमको प्रिपरेशन करिया पे पड़िबो आमे जो आम लाइफ रे आमे जो स्ट्रगल करिबा से स्ट्रगल पई हमको निजको निजे प्रिपेयर करिया पे पड़िबो आ तो से प्रिपरेशन हमको किए करेबो बस ई प्रिपरेशन हमको हेल्प किए करेबो ना एजुकेशन दैट इज द थर्ड एम. एजुकेशन शुड डेवलप द कैपेसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट ही कम आउट विक्टोरियस इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ जय युक्त होबो जो कथाटा स्ट्रगल ऑफ लाइफ एंड एक्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड. तो थ्रू एजुकेशन एटा पॉसिबल बोली सेति पई सेटा को एम रे एस्टैब्लिश कला कि ना नेचुरलिज्म. Then the fourth one is adaptation to the environment. आमे जो एनवायरनमेंट रे रहउचंती से एनवायरनमेंट रे आमे निजको एडॉप्टेड करिबा काहे कि आमे जो उठी रहउचंती जदी प्रॉपर्ली वी आर नॉट एडजस्टेड इन द सिचुएशन देन वी कैन नॉट गेट एनी हेल्प और वी कैन नॉट सर्वाइव प्रॉपर्ली इन आवर नेचर. सो a very important concept is adaptation to the environment. The aim of education should be strengthen the capacity of adaptation of the individual. So, through education, we should develop different good qualities, good things in our life, and by these help, आमे जदि कहि परिबा due to that qualities, बा आमे कहि परिबा से जगह रे कोन ना से जो क्वालिटी रो जो कांसेप्ट आम पाखे रहिबो आ से क्वालिटी रो हेल्प रे आमे हम निजको आम एनवायरनमेंट रे प्रॉपर्ली एडॉप्टेड करि परिबा. Should we strengthen the capacity of adaptation of the individuals? Reinforcement by education will give the individual added capacity and efficiency to the task of adaptation. Okay, so through education we should gain different type of knowledges, different type of concept of different conditions. ये सब कथा हमें जानिला परे आम पई इजियर होबो to adopt in new situation or existing situations. The fifth aim of education, that is improvement of racial gain, improvement of racial gains. तो एठी कोन देखिबा जे गुटे बायसनेस कथा रहिबोनी गुटे ह्यूमन बीइंग हिसाब रे वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल वी ऑल ह्यूमन बीइंग बा लिविंग थिंग्स आर इक्वल एई कांसेप्ट को नै की आम लाइफ रे आम निजको निजे तयारी करिबा. दैट इज द फिफ्थ एम. दैट इज सम नेचुरलिस्ट बिलीव दैट racial heritage of culture and civilizational achievements cannot be transferred from generation to generation by the mere natural processes of inheritance. As such, education should preserve this natural heritage and develop it further. Okay, जो unbiased manner रे आम लाइफ रे विभिन्न कथा को कोन करिबा ना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आमे ट्रांसफर करिबा. जो आम सराउंडिंग रे जो कल्चरल कांसेप्ट अछि आमे जो सोसाइटी रे रहउचंती आम पाखरे जो हैबिट्स अछि आम पाखरे जो कस्टम्स अछि ट्रेडिशंस अछि ए सब कथा अनबायस्ड मैनर रे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन केमिति ट्रांसफर करा जिवो सेही कथाटा किए काहा द्वारा पॉसिबल ओनली बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन इज ओनली वन मीडिया व्हिच हेल्प्स टू प्रिजर्व ट्रांसमिट एंड प्रमोट different things from generation to generation. Then the sixth aim is natural development. Here, education should develop the child according to the inborn tendencies, then inheritance,
then inclinations, aptitude, capacities in free environment. So through education we provide free environment for the proper development. Okay, because all the individuals have their own capacity for आम कहि परिबा their own innate capabilities ए सब कथा every individual को पाखरे अछि. Okay, so here our duty is to provide true and proper education for the only development of these innate qualities, and due to that we must need or we must provide sufficient freedom to the students for their development. So through education we try to provide freedom to the individuals and ensure the natural development within the individuals. Then the last aim of education according to naturalism, that is autonomous development. निजु को निजे केमिति डेवलप करिवो. तो development of individual is to be free, fully autonomous and self assured. आउ केही डेवलपमेंट रे माने जो आम पई आउ केही डेवलपमेंट आम निजु को करि परिबिनी. So we are responsible for our own development and we can do different things for ourselves and try to develop ourselves. So autonomous development is another important aim of education according to naturalism. Okay, so these are the basic aims of education according to naturalism. तो एग्जाम रे आसिले भी आमे एई कथा गुडा को लिखि परिबा. देन आमे जानि चंती एम्स ऑफ एजुकेशन परे करिकुलम आसीबो. तो करिकुलम स्ट्रक्चर रे से कोन कहूची, करिकुलम शुड बी कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड आइटम्स which reflects the inborn tendency, जोटा नेचुरल टेंडेंसी जे आम पाखरे अछि, जेहेतु ये नेचर रो कथा कहूची तेनु जो इनट नेचुरल कांसेप्ट अछि से नेचर से जो नेचुरल इनबॉर्न टेंडेंसी अछि ताकू बाहर को नै के आसीबा थ्रू एजुकेशन. नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल एक्टिविटीज, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सेक्स प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रेन. सो एई कांसेप्ट को बेसिक कांसेप्ट हिसाब रे से कंसीडर कला एंड एई कांसेप्ट केमिति सैटिस्फाई हबो इन आवर लाइफ. For these concepts, but for satisfying all these concepts, naturalism provide or support these type of curriculum according to games, sports, physical culture, biology, physics, nature study, language, history, geography and other allied subject. जो subject गुडा nature को बेस करके ही थिबो, से inner development हो बा आउटर नेचर रो डेवलपमेंट पई हो. तो जहा पई हो ना कहीं की डेवलपमेंटल प्रोसेस, इनर डेवलपमेंटल प्रोसेस और आउटर डेवलपमेंटल प्रोसेस पई जो सब्जेक्ट दरकार करिकुलम रे सेही से भी करिकुलम रे सेही सब्जेक्ट को प्लेस कला किए ना नेचुरलिज्म. सो दीज आर द करिकुलम, बेसिक करिकुलर कांसेप्ट अबाउट बा अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिज्म. देन करिकुलम को ट्रांजिट करिया पई मेथड ऑफ टीचिंग दरकार. तो मेथड ऑफ टीचिंग रे कोन नेचुरलिज्म प्रेस्क्राइब कला ना, नेचुरलिज्म प्रेस्क्राइब लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग बाय प्ले विथ द बेस ऑफ टीचिंग. सो ए तीनटा सारा को जदी हमें टिके माइन्यूटली ऑब्जर्व करिवा, ऑल आर रिलेटेड टू नेचर. जेतेबेला हमें लर्निंग बाय डूइंग कथा कहउजंती, वी लर्न बाय डूइंग समथिंग बाय ओन सेल्फ, बाय ओन. आमे निजे निजे किछि गुटे काम करिवा आ सिखिबा से काम. तो आमे निजे तळे काम करूचंती, आम नेचुरल प्रोसेस रे आमे निजे से काम रे पार्टिसिपेट करूचंती आ सिखुचंती. तो सेठी नेचर को से फोकस कला. सिमिलरली लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, इन आवर सराउंडिंग वी फाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट एंड वी आल्सो लर्न डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट और नेचुरल सेटअप. सो experience also provide great importance in the process of learning. Then the third one is learning by play as the basis of teaching. तो learning to केते joyous activity रे हमें नहीं के आसीबा, हम नेचुरल जो आम भितर जो नेचुरल टेंडेंसी अछि बा हम सराउंडिंग रे नेचर को यूज करिकी केमिति प्ले हुए प्रोसेस रे लर्निंग को हमें ट्रांजिट करिवा. दैट इज द अनदर मेथड ऑफ नेचुरलिज्म अकॉर्डिंग टू बा नेचुरलिज्म प्रेस्क्रिप्शंस. ओके, तो ये देखिबा द प्रिंसिपल्स advocated by naturalists have brought into being the modern methods of teaching which are जोटा कि आमे देखि परिबा मॉडर्न मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस रे से नेचुरलिज्म रो कांसेप्ट भी रिफ्लेक्ट हुए, जेमति कि ऑब्जर्वेशन मेथड, प्ले वे मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड जोटा कि हम डिस्कवरी मेथड बोली भी कहि परिबा. लिखि दउ जे एठी ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी, डाल्टन मेथड, देन मॉन्टेसरी मेथड जोटा कि मॉन्टेसरी स्कूल रे जो आमे सब देखुचंती प्ले स्कूल ले जो बढ़िया सब टीचिंग दिया होची प्ले वे प्रोसेस रे
that method is also advocated by naturalism. Then experimental method जोटा कि scientific method. तो generally आमे एठी जदि methodological approach को देखिबा और curriculum को देखिबा तो materialistic world को से बेसी फोकस करूची आ materialistic world पई हमकु science आ technology ए दुटा concept बहुत important रखे because when we want to learn or when we want to know about our materialistic world then we must need the subject like science and technology. So naturalists also believe that science and technology are the very important subject ଆଉ ଏଇ subject गुडा पढ़ाइया ପାଇଁ these are the appropriate method according to naturalism. Okay, clear to all? Then come to the next part. All these methods are self learning methods and as such they are very effective and purposeful. जेहेतु एटा self learning process रे रहउची आमे निजे निजे participate करूचंती आ पढुचंती due to that these methods are very effective in nature. Then आमे जो मेथड ऑफ टीचिंग परे आमे देखिबा कोन ना टीचर रोल बा टीचर केमिति होबा दरकार अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म. तो नेचर इज द ओनली सुप्रीम टीचर. एठी टीचर रो किछि दरकार नाही बोली प्रथम रु कुहा होउची काहे कि नेचर इज द ग्रेट टीचर. एंड जनरली आमे भी देखिबा धर जो गुटे एनिमल्स को कथा आमे नबा गुटे एनिमल जते बेले जन्म निये सीए तार जति की बेसिक नीड्स को फुलफिल करिवा कथा से ऑटोमेटिकली आपे आपे सिखि जाय. कोठु सिखे ना फ्रॉम द नेचर. So nature is the greatest teacher for every individuals. In those close contact with child develops normally and naturally. In the process of education, the place of the child is more important and the central than the teacher. The teacher ro role ta apeksha student ro role but child ro role important because they are the basic entity for our educational process. आमे पाठ जहा को पढेबा सेही लोकटी इंडिविजुअल but idealistic concept रे teachers are more important than the student or child. But here in the naturalistic point of view, children or child are the most important persons than the teachers. The teacher is only set the stage and allow the child to act freely. Okay. तो जो setup रे पिला पढ़िबे teacher रो role कोन to set up the stage for the learning purpose or learning process. According to his inherent capacities, the teacher is only to act as a sympathetic observer and guide. तो टीचर रोल एठी कोन अछि इंपोर्टेंट रोल कोन रखुची ना टीचर आर बिकम द sympathetic observer and also become a guide. केवल लर्निंग प्रोसेस रे स्टूडेंट माने इन्वॉल्व होउचंती कि नाही बा प्रॉपर्ली केते बेले हेबे एई प्रोसेस रे सी केवल कोन करिवो ना टीचर गाइड करिवो स्टूडेंट को. दैट इज द बेसिक रोल ऑफ टीचर इन नेचुरलिस्टिक फिलोसफी. देन डिसिप्लिन. तो जेमिति कि आमे आइडियलिस्टिक कांसेप्ट रे डिसिप्लिन कांसेप्ट देखितलु जे दे बिलीव दैट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी फॉर द एजुकेशनल पर्पस. आ गोटे ह्यूमन बीइंग को जतले जे ह्यूमन बीइंग आमे ट्रीट करूचंती बा ह्यूमन बीइंग हिसाब रे जतले आमे जो ताको बिल्ड अप करूचंती एट दैट टाइम वी मस्ट नीड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी कांसेप्ट. बट हियर डिसिप्लिनरी कांसेप्ट इज totally different than the idealistic philosophy. In the field of discipline also, naturalists depend upon nature, okay, and advocates the theory of discipline by natural consequences. If a student make or commit any type of mistake, then naturalistic philosopher believe, leave them to the nature. Nature will teach how to maintain discipline or which things are good and which things are bad. Okay. तो आमको जदि आमर नेचुरलिस्टिक फिलोसफी अनुसार जदि गोटे पिला किए प्रॉब्लम क्रिएट करूची बा कोन गोटे मिस्टेक कला ताको नेचर रे छाडी दबा ता निज नेचर रे आ ता सराउंडिंग नेचर रे छाडी दबा नेचर सिखै दबो ताको डिसिप्लिनरी एटीट्यूड. अकॉर्डिंग टू देम नेचर विल पनिश द चाइल्ड इफ ही contravenes the law of nature, okay, and thus he will learn by consequences of his own actions. ता निज एक्शंस रु निज जो एक्शन रो जो कॉन्सिक्वेंसेस हला जो प्रॉब्लम क्रिएट हला नेचर रे से नेचर रो ताकू सिखे दबो से प्रॉब्लम को केमिति सॉल्व करिवो बा से प्रॉब्लम रे कोन कोन जो आम पई कोन कोन जो प्रॉब्लम क्रिएट होउची से कथा को से देखि परिवो. सो दैट इज द डिसिप्लिनरी कांसेप्ट अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म. देन आमे जते बेले ए कांसेप्ट रु आमे देखिलु जे विभिन्न एजुकेशनल इंप्लिकेशन रे आमे डिस्कशन कोलु. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे एतिकी लिखले सफिशिएंट आ बहुत ता बाबद रे जिबार नाही. हां हमकु जदी आगु किछि पढिबार अछि बा आमे जदी आगु को हायर एजुकेशन रे गले एजुकेशन बेस रे तो हमकु आगु अलगा नॉलेज दरकार. बट बीएड पर्सपेक्ट रे एतिकी कथा सफिशिएंट. ओके. तो वर्तमान इवैल्यूएशन ऑफ नेचर करिवा.
नेचुरलिज्म कॉन्सेप्ट जो जो हम पढ़ी के आसिले ताको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करबा जे कोन जगह प्रॉब्लम हो रहउची आ कोन जगह ठीक ठाक लागुची हमको जो फास्ट कॉन्सेप्टटा जो इवैल्यूएशन रे आमे जतले डिस्कशन करबा देखिबा जे ए जो कॉन्सेप्टटा रहउची दैट इज वन साइडेड कॉन्सेप्ट नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी दैट इज वन साइडेड एंड अनसैटिस्फाइंग एम ऑफ एजुकेशन जो एम ऑफ एजुकेशन देला दैट इज नॉट फुल फ्लेज्ड एम ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नुहे बोली हमको इवैल्यूएशन रे हमें जानि परिबा द चाइल्ड विल बिकम अनसोशियल विथ नो फीलिंग ऑफ सोशल सर्विस एंड सोशल गुड he will develop unsocial okay he will develop into a pure animal tendencies are being socialized through education and then social environment is greatly essential जोटा कि नेचुरलिज्म कांसेप्ट रे रहिला नाही सोसाइटी एंड सोशल environment is very essential for the human being because we are the social animals and due to that we are different from the other animals तो ए जो other animals जो different concept टाकू environment ए जो naturalism concept clearly किछि define करला नाही ओके एटा गुटे प्रॉब्लम हिसाब रे भी हमें कंसीडर करि परिबा then second one is naturalism always emphasis on the present need केवल प्रेजेंट सिनेरियो प्रेजेंट नीड को ही से एम्फासिस देला आउ किछि कथा को से इंपोर्टेंस बा एम्फासिस देला नाही नेचुरलिज्म लेस स्ट्रेस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल इट एडवोकेट्स नो कंसर्न फॉर स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड रिमोट फ्यूचर ओके तो जेहेतु ह्यूमन बीइंग्स तांको पाखरे गुटे इनर टेंडेंसी थाए स्पिरिचुअलिज्म रो सेही कांसेप्ट ऊपर नेचुरलिज्म पूरा साइलेंट रहिला ता बाबद किछि भी कथा कहिलानी तो केवल प्रेजेंट नीड ह्यूमन बीइंग रो जहा अछि ताकू फुलफिल करिवा केवल इंडिविजुअलिटी रो इंपोर्टेंस को रखिबा ए कांसेप्ट बेस रे नेचुरलिज्म जो कंसंट्रेटेड रहिला तो एटा गुटे प्रॉब्लम बोली भी हमें एठी कंसीडर करूचंती आ गुटे कांसेप्ट कोन रहिला ना इग्नोर बुक्स तो बुक्स रीडिंग को से डोमिनेट करी रखिला बिकॉज़ नेचर आर द एजुकेशन और नेचर आर द प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन और द प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज तो सी बुकिश कांसेप्ट को बुकिश नॉलेज को टोटल डिनाई कला बट एटा गुटे प्रॉब्लम क्रिएट रहिला कोंथरे नेचुरलिज्म कांसेप्ट रे बिकॉज़ बुक्स आर आल्सो सिमिलरली इंपोर्टेंट कारण बुक रू भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हमें गेन करि परंती नेचुरलिज्म एम्फसाइजेस दैट द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी बेस्ड ऑन हिज एक्टिविटीज and life experiences but only activities and experiences cannot ensure the total development of child's personality due to or for this development we must need some good books okay तो जदि आमर एमिति आमर जने टीचर थिले कहंती जे हमकु जदि गुटे गुड ह्यूमन बीइंग होबार अछि तो बेसी नुहे लाइफ रे तीनटा भलो बही जदि आमे जने गुटे इंडिविजुअल पढी दबो ऑटोमेटिकली ता लाइफ चेंजेस हे जिवो तो सही कांसेप्ट रे बुक्स आर वेरी एसेंशियल और इंपोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स किंतु नेचुरलिज्म ए कांसेप्ट को टोटल डिनाई कला देन मोर इंपोर्टेंट टू साइंटिफिक सब्जेक्ट्स इन करिकुलम ओके जेतु मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और मैटर कथा ऊपर बेस करी की फिलोसफीटा तयारी हला ड्यू टू दैट इट प्रोवाइड मोर इंपोर्टेंस टू द साइंटिफिक सब्जेक्ट एंड करिकुलम इन करिकुलम ओके नेचुरलिज्म एम्फसाइजेस साइंटिफिक एजुकेशन हार्बर्ट स्पेंसर ए स्ट्रॉन्ग नेचुरलिस्ट has given prime importance to the scientific subject and a secondary place to the humanities in the curriculum but ame jodi gote value based education kotha कहउछन because our society and our culture need values jodi amo pakre values good values nahi then we cannot consider ourselves as a good human being so e jo values amo pakre रहिबो से values रो concept किछि भी discussion कला नहीं naturalism केवल साइंटिफिक सब्जेक्ट आउ से वैल्यूज रो कांसेप्ट हमें मेनली कोठु पाऊ ना ह्यूमैनिटीक सब्जेक्ट रे पाऊ किंतु नेचुरलिज्म कोन कला ना से साइंटिफिक सब्जेक्ट ऊपर फोकस रहिला आ ह्यूमैनिटीक सब्जेक्ट को डिनाई कला बा सेकेंडरी प्लेस रे रखिला तो जोटा की प्रॉब्लम गुटे क्रिएट होबो बोली हमें डिस्कशन करि परिबा देन द लास्ट वन इज नो इंपोर्टेंस टू द टीचर रो इंपोर्टेंस किछि रहिला नाही काहे कि एठी नेचुरलिज्म बिलीव कला जे आवर नेचर इज द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट टीचर फॉर द individuals naturalism assigns to the teachers is a role of mere guide and observer okay guide और observer हिसाब रे हमें गुटे कंसीडर करूचंती इंडिविजुअल को he is to be a sympathetic guide and helper in structuring experiences for the child okay child पई गुटे helper हिसाब रे गुटे टीचर्स एजुकेशनल स्ट्रक्चर रे काम करिवो and observing the activities undergone he
he is not to interfere or plan any teaching directly. जोटा कि जिते abstraction रो concept आसी जाए naturalistic concept रे abstraction concept टा बहुत कम थिला जिते abstraction रो concept आसीबो in that time we must need a good teacher नहले हमको abstract concept आडू को नहीं परिबे नाही जदि abstraction न रहउची तला हम भितर values रो development ही परिबो नाही तो टीचर रो importance भी आम एजुकेशन स्ट्रक्चर रे इक्वाली इंपोर्टेंट किंतु नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर जोटा कि बा फिलोसफी एई टीचर कर इंपोर्टेंस को से माने रिड्यूस कले ओके सो दीज आर द बेसिक इवैल्यूएशन ऑफ नेचुरलिज्म जो कांसेप्ट उडा हमें पढ़ी के आसिलु सेम कांसेप्ट को हमें प्रॉपर्ली एठी इवैल्यूएट करिलु ओके देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म तो मु कंप्लीट स्लाइड टाकू नहीं आसिली तो मेरिट्स रे हमें कोन देखिबा द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जेहेतु एटा इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी को हमें जदी टिके आउ टिके ऑब्जर्व करिबा जे नेचुरलिस्टिक फिलोसफी आर टोटली बिलीव ऑन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ओके तेनु चाइल्ड साइकोलॉजी ऊपर से बेसी फोकस्ड रहिला हमें ताको फ्रीडम दबा ताको इनर पोटेंशियलिटी रो डेवलपमेंट करिबा ताको साइकोलॉजी को बुझिबा केवल चाइल्ड स्ट्रक्चर्ड फिलोसफी हिसाब रे आको कंसीडर करा गला तो चाइल्ड रो डेवलपमेंट जेहेतु हम एजुकेशन स्ट्रक्चर ऑलवेज वी ट्राई टू डेवलप आवर स्टूडेंट्स बा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कथा सब बेले हम एठी डिस्कशन करछंती दैट इज इंपोर्टेंट तो सेही कांसेप्ट को से मेरिट्स रे डिफाइन करा गला देन साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी दैट इज अनदर इंपोर्टेंट मेरिट एम्फासिस ऑन एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम जो करिकुलम जेहेतु प्रेजेंट सिनेरियो प्रेजेंट एक्जिस्टेंस ऊपर ए फिलोसफी बेस कला ड्यू टू दैट experience centered curriculum is very necessary or essential for our educational structure that is another merit of naturalism then important contribution in the field of method of teaching ये जो natural setup रे बा naturalism concept रे जो method of teaching सब बाहर के आस्थिला till now we use these method of teaching in our educational structure so ये जो new बा grown बा हमें कहि परिबा जो नुआ नुआ methodological approach हमें आनी चंती that is the giving of our naturalism concept then opposition to repression in the field of discipline जोटा कि रहिला जो हमरो आइडियलिस्टिक कांसेप्ट रे बा अदर फिलोसॉफिकल कांसेप्ट रे हम जतबेले देखुचंती जे गुटे डोमिनेंस रो कथा रहउची स्टूडेंट को हमें डोमिनेट करिक रखुचंती एजुकेशनल स्ट्रक्चर रे बट आइडियलिस्टिक फिलोसफी फ्रीडम रो कथा कहउची जोटा कि हमें ताको कंप्लीट फ्रीडम दबा तांकर इनर पोटेंशियलिटी रो डेवलपमेंट पई आउ तांकर सेल्फ डिसिप्लिनरी एटीट्यूड रो डेवलपमेंट पई तो these are the basic merits of naturalism then come to the demerit part in the demerit children are giving more freedom over freedom and given the most importance to the exercise जो ठीक कौन प्रॉब्लम है ना हमें केवल इंडिविजुअलिटी को ही फोकस करू आम सोसाइटी आम सोसाइटी रो जो सोशल फेनोमेनन अछि सेटी हमें बेसी आउ इंपोर्टेंस देलु नाही बा वैल्यूज को हमें इंपोर्टेंस देलु नाही बा हमें आम स्पिरिचुअलिज्म रो कांसेप्ट को सेटी इंपोर्टेंस देलु नाही केवल इंडिविजुअल को फ्रीडम दबा तार डेवलपमेंट करिबा एई कांसेप्ट ऊपर कंसंट्रेटेड रहिला तो एटा को हम मेरिट हिसाब रे कंसीडर करि परिबा देन नॉट इंपोर्टेंस ऑफ द टीचर कारण एजुकेशन स्ट्रक्चर रे टीचर इज अनदर पिलर हिसाब रे हमें कंसीडर बा कांसेप्ट को नउ तो जते बेले हमें गुटे टीचर को इंपोर्टेंस देले नाही तो से जगह रे सेही कांसेप्ट गुटे डिमेरिट हिसाब रे आसिला मोर एम्फासिस ऑन द प्रेजेंट नीड ऑफ द चिल्ड्रेन पिलांकर प्रेजेंट नीड को बेसी इंपोर्टेंस दिया गला बेसी एम्फासाइज करा गला जोटा कि से माने ओवर कोन माने जो हम कहि परियो ओवर हेई गले से माने केवल निज ही कथा ही चिंता कले तो जोटा कि फ्यूचर रे सोसाइटी पई प्रॉब्लम क्रिएट करियो बोली ताकू डिमेरिट रे हमें रखिलु जे मोर एम्फासिस ऑन द प्रेजेंट नीड ऑफ द चाइल्ड सो दीज आर द बेसिक मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नेचुरलिज्म एंड ऑल द कांसेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म बा नेचुरलिस्टिक फिलोसफी ओके थैंक्स टू ऑल आउ आमे पुणी आउ किछि दिन भितरे आमे आउ गुटे दिटा वीडियो ई फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन नु नेकी आसीबा थैंक यू।